Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Namaste students, I hope everyone is fine and taking good care of yourself. Today we are going to continue with SP part, and we were discussing about company secretary, right? The qualification and qualities about company secretary. We have discussed in last video the qualities a company secretary should have. Now today we will discuss the qualifications of a company secretary which they must have. So let us start. In the Company Act, minimum qualification of the company secretary is prescribed, but usually the secretary acquires more qualification to fulfill his responsibility effectively and easily. This qualification can be achieved through education and training. These qualifications are as under. So there is already a prescribed course for company secretary. CS का जो कोर्स होता है, it has the same heading, company secretary ही उसका head है. And if you have asked many students who have done their bachelor's in commerce, like what you have chosen for, आपने भी commerce field ली है. If you are choosing to be a graduate in commerce, then you can have many other options, like you can do CA, chartered accountant, you can do MCom, masters in accounts, and masters in commerce, and you can also select the course which has the same name. It is company secretary and it has a short form CS. But not only that prescribed course, a company secretary should have so many different qualifications which is related to different department. क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को सिर्फ अकाउंट्स देखना या तो सिर्फ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके स्केड्यूल डिसाइड करना, इतना ही काम नहीं होता. दे हैव टू डिस्कस एंड दे हैव टू डू सो मेनी थिंग्स. सो दैट इज व्हाई they need qualification under many different department, and what through education, through right education and right training, they can be at the place where they want to. If you wish to become a company secretary, then you from even 12th standard you have to set a goal that I want to go in this field, and these are the qualities, these are the qualifications which I need to be a company secretary. And from that time only you have to be ready to get the training, a proper training for the field. And starting with educational qualification, the company secretary must have certificate of Institute of Company Secretary. It means he must be company secretary. Moreover, degree of law helps him to prepare agreements, legal documents, contracts in other legal affairs. See, if you have done your course of company secretary, you are eligible. अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद if you have started to get a training of company secretary, that is a prescribed qualification. ये काफ़ी है to become a company secretary. But you need additional degree of law. That means you have to do bachelor's of law. Why? Because company secretary has to prepare agreements, legal documents, contracts, and many other legal formalities they have to go through. And for that you must need a knowledge of law. अगर आपको कोई legal document पढ़ने हैं तो उसमें सारे कितनी एक्ट्स आते हैं, कितनी जो आर्टिकल्स आता है, you must be aware with it. And without proper education you cannot be properly aware with the field. So to prepare agreement, to legal documents, contracts, you must have a degree of law. So that is additional qualification which is required. Then next is knowledge of accounting. Definitely, because you have to handle
the account department as well. So books of account must be prepared as per rules and regulation of Company Act in time. Then only it may be possible to get them audited in time. For any company, the most important thing is to audit your accounts in time. Whatever time is given, generally 1st March is the accounting year for any company. हमारे लिए न्यू ईयर किस तरह से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द 1st January. बट फॉर एनी कंपनी अकाउंट डिपार्टमेंट्स 1st March is the year and March ending. सब लोग मार्च एंडिंग में इतने ऑडिट के लिए परेशान क्यों होते हैं? बिकॉज इट इज देयर अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है. 1st April इज द बिगनिंग ऑफ एनी न्यू ईयर ऑफ अकाउंटिंग. कंपनी के लिए अकाउंट्स शुरू करना है, जो नए खाते शुरू करते हैं. यू मस्ट बी अवेयर विद द डिपार्टमेंट्स. तो हमेशा 1st April इज द अकाउंटिंग ईयर एंड मार्च एंडिंग. दैट इज वाई एवरीवेयर during end of the March, the people who are in business, they were very much worried about their audits, and that is why the account knowledge of account is required for a company secretary. company secretary के लिए account का knowledge भी बहुत ज़रूरी है. and obviously he or she is a student of commerce, so they must be having the basic knowledge of accounts. But to be very much into it, you have to gather a proper training that how you have to prepare, because there are certain rules and regulation according to the Company Act. Company Act के तहत आपको accounts prepare करने होते हैं और उसका audit जो है वो भी time पे करवाना होता है. These are the responsibilities of the company secretary. If the accounts are prepared in time, the company secretary can submit annual accounts in time to the shareholders at a annual general meeting. He is able to do this if he has basic knowledge of accounts. So every year generally board of directors की meetings होती है, shareholders की meeting होती है, but every year they have annual account meeting. shareholder के साथ general meeting जो होती है उसमें they have to give the proper amount of profit that we have done in last academic year, last year, how much profit they have made in 2020 if they want to start. Obviously 2020 is a year of losing, year of loss because lockdown. तो 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ था. So from 1st April नया जो एक ईयर होता है, एनुअल अकाउंट शुरू होता है नया, वो ख़त्म कब होगा? 1st April 2020 को जो अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ है वो ख़त्म होगा 31 मार्च को. नाउ फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग एंड आफ्टर द ऑडिट हैज़ बीन डन, they have to submit the report in the general meeting to the shareholders that see this percentage, that much percentage of profit we have made in last year, or this much loss we have faced. हमें इतना नुकसान हुआ है या तो इतना प्रॉफिट हुआ है. You have to show it and then only you can survive. You have to show to shareholders as well. इसीलिए तो हर साल जो है ऑडिट रिपोर्ट्स के बाद शेयर मार्केट में दे शो अस द एनुअल रिपोर्ट एंड 52 वीक्स हाई एंड लो. यानी कि 52 वीक्स में जितने भी पर्टिकुलर शेयर है, फॉर एग्जांपल रिलायंस पावर के शेयर है या तो अदानी ग्रुप के शेयर्स है, तो 52 वीक में उस शेयर की हाईएस्ट प्राइस क्या हुई और लोएस्ट प्राइस क्या हुई, वो आफ्टर देयर एनुअल मीटिंग, आफ्टर देयर जनरल मीटिंग ऑडिट हो जाने के बाद दे यूज टू डिस्कस इट कि हम यहाँ तक पहुँचे थे भाई, हमारे शेयर के प्राइस थे वो नियरली 1200 रुपीज़ तक पहुँच गए थे एंड देन वी फेस अ लॉस और अभी शेयर प्राइसेस जो है वो 700 हो गए या तो 600 रुपये हो गए. तो इट वॉज अ ड्रास्टिक चेंज
जो आया है, they have to concentrate on that as well. Knowledge of office administration. The company secretary is a chief of administrative office. He must have ability and knowledge of distribution and coordination of work between different departments. The company secretary requires knowledge of office administration to resolve problems arising in day-to-day office function or day-to-day office life. Why they required office administration? क्योंकि उनका जो, हमेशा याद रखना, कंपनी सेक्रेटरी का जो मेन काम है वो है दूसरों से काम निकलवाना. कि आपके अंडर, आपके डिपार्टमेंट के अंडर में अकाउंट डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 40 लोग काम करते हैं, तो 40 के 40 लोगों के पास से काम निकलवाना, दैट इज द आर्ट. सो ही हैज टू मैनेज, he needs ability and knowledge of distribution and coordination of work. 40 लोग हैं तो 40 को इक्वली वर्कलोड होना चाहिए, उनका काम इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए, और whatever टाइम लिमिट हैज बीन गिवन, उस टाइम लिमिट में आपको कोऑर्डिनेट करके वो काम आपको सबमिट किया या नहीं वो भी आपको देखना है. सो कंपनी सेक्रेटरी हैज टू बी वेरी मच अवेयर विथ द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. किसी को अपॉइंट करने से लेकर उसको कितने महीने की ट्रेनिंग देनी है, कितने महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको प्रोबेशन पीरियड पे रखना है, प्रमोशन देना है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क क्वालिटी यू रिक्वायर्ड और योर कंपनी रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें कंपनी सेक्रेटरी को पता होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सी ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर नॉट फ्री. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा फ्री नहीं होते. कब जनरल मीटिंग करनी है, कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी है, कब शेयर होल्डर्स की मीटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें कंपनी सेक्रेटरी को पता होनी चाहिए कि कहाँ पे इमरजेंसी है, कहाँ पे सबको बुलाना है. सी हियर ऑल्सो गिवन दैट देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ मीटिंग, जिसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, शेयर होल्डर्स की है, क्रेडिटर्स की है. अगर आपने कंपनी ने कहीं से उधार लिया है या तो लोन लिया है और यू हैव अप्लाइड फॉर अ लोन, सो यू हैव टू अरेंज अ मीटिंग इन अ प्रॉपर वे एंड एट अ प्रॉपर टाइम एज वेल, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर नॉट ऑलवेज फ्री कि वो आप जब भी मीटिंग अरेंज कर दोगे वो लोग आ जाएंगे वहां पे. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ Ratan Tata, for example. He has so many different businesses. He has to manage Taj Hotel, he has to manage Tata Steel, he has to manage different departments and different businesses. अब अगर उनको टाटा स्टील में या तो कोई और उनकी जो कंपनी है वहाँ पे मीटिंग है एंड द सेम डे द अदर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल ताज होटल में भी मीटिंग रख दी, he cannot be able, he will not be able to attend both the meetings on the very same day. So according to the convenience of board of directors, according to the convenience of shareholders or creditors or any certain people, even the staff meeting as well, board of directors को staff के साथ मिलना है, then also they have to manage their timings. So this thing he has to manage everything. In this meeting, secretary has to perform duties before meeting, during meeting and after meeting. He has to issue notice for meeting, that to make people aware about the meeting, prepare the agenda of meeting and also has to write down the minutes. So a company secretary has to perform every time. ऐसा भी नहीं कि चलो फोन करके बता दिया कि मीटिंग है. You have to prepare a circular, you have to issue a notice and you have to send it to each and every member who need to be present over there. सबको उस मीटिंग में जितने लोगों को प्रेजेंट होना है उनको इन अ रिटर्न फॉर्मेट एक मैसेज जाता है. देन यू हैव टू प्रिपेयर द एजेंडाज कि आप क्यों बुला रहे हो मीटिंग. इमरजेंसी की वजह से कोई कंपनी में लॉस हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है कंपनी में, एनी इवन सिंगल थिंग यू हैव टू प्रिपेयर.
स्मॉलेस्ट डिटेल यू हैव टू ऐड इन दैट एजेंडा कि भाई ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आपको बुलाया है. इफ़ यू नीड टू शो देम अ प्रेजेंटेशन, यू हैव टू टेल देम दैट प्रेजेंटेशन वुड बी रेडी बाय द टाइम ऑफ मीटिंग. And also to write down the minutes. Here minutes means whatever discussion has been done during the meeting time, that also they have to write down, that also they have to note down. During this meeting has to observe rules and regulation for quorum, proxy and voting right as per the Company Act. So during the meeting also they have to first check, they need to check proxy कि अगर एक इंसान मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो उसके बदले किसी इक्वल अथॉरिटी के इंसान को भेजेगा. अगर वोटिंग होने है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोट करने वाले हैं फॉर चूजिंग द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, देन ऑल्सो दे हैव टू डिसाइड दैट. नॉट ओनली दैट बट ही नीड्स टू डिसाइड द क्वोरम एज वेल. Now what is quorum? Quorum is the minimum number of the members that they need to be present. अगर 100 लोगों को या तो 50 लोगों को मीटिंग में बुलाया है तो उसमें से एक क्वोरम डिसाइड होता है कि मिनिमम जो है आउट ऑफ 50, 20, 25, 26 या तो 30 पीपल दे नीड टू बी प्रेजेंट. So they need to decide and arrange all this thing. पहले तो मीटिंग एजेंडा डिसाइड करना, नोटिस इशू करना, मिनट्स नोट करना, उसके बाद क्वोरम डिसाइड करना, प्रॉक्सी अगर कोई इंसान के बदले उसका बेटा बेटी एनी अदर पर्सन विद द सेम राइट्स आ रहा है तो वो वोटिंग राइट्स, एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड. So company secretary requires a knowledge of meeting management. To arrange a meeting is not an easy task. Next is knowledge of various acts. As I said earlier, you are supposed to know various laws regarding the company. And if you have done your bachelor's or master's in law, it would be beneficial for the person himself. It is very essential to manage company effectively. In this law, particularly Indian Contract Act, SEBI Act, Sales and Goods Act, Stamp Duty, Provident Fund Act, Law of VAT, Law of Service Act are essential for the company secretary to perform his duty with perfectly and lawfully. By the knowledge of these laws, he can prevent probable legal hurdles. So if you are aware with every single law which is required, your work will be easier, much more easier. अगर आपने ही लॉ किया है, मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है, आप अवेयर है इन सारे लॉज से जो दिए गए, स्टैम्प ड्यूटी का, प्रोविडेंट फंड का, लॉ ऑफ वैट, जीएसटी अब आ गया है, अगर आप अवेयर है देन यू डोंट नीड अ प्रॉपर lawyer for a company because you can handle those matters. Legal matters के लिए separately एक lawyer रखने की ये ज़रूरत नहीं होती, जो आपको instructions देते हैं, जो आपको advise करता है for the benefit of company. So you don't need a legal advisor if you are aware with the such laws and acts for the betterment of company. Now knowledge of economical and political affair. The company is formed in society. Ultimately, it is a part of society. It comes across different sections of society. The company is affected by the economic and political affairs of society. The secretary must converse himself with present affairs and changing situation. So the board of directors may be intimidated in proper time, situation can be handled properly and arising situation can be turned into profitable one. Now we all are part of society, whether it is Mukesh Ambani or whether it is a smallest businessman in your city. We all are part of society and ultimately society will affect the business. सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं, वेदर इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनी काइंड ऑफ चेंजेस विल
affect your business, so you must be aware with the present affair and the changing situation or the scenario of society. Then only board of directors will be alert. They can handle the situation in proper way. For that I can give you example of demonetization. Now demonetization, when Narendra Modi announced that after a midnight of a certain day, the notes of 1000 and 500 will not be in use, 200 2000 वो यूज में नहीं आएंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ा? क्या कभी जैसे नॉर्मल पीपल, नॉर्मल सिटीजन हम 2-2 हज़ार के लिए बैंक के सामने लाइन में खड़े रहते थे, एटीएम के सामने पैसे निकालने के लिए? हैव वी सी एनी ऑफ द बिजनेसमैन, लीडिंग बिजनेसमैन के जो डिमोनेटाइजेशन के वक्त एटीएम के सामने खड़ा होगा? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। क्या मुकेश अंबानी खड़ा रहा वहां पे? नहीं। क्यों? बिकॉज दे वर अवेयर विद द सिचुएशन दैट सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन इज अबाउट टू अनाउंस। उनको पहले से ये अंदेशा होता है, एंड दैट इज वाई दे आर वेरी मच creating a relation with politicians, with the department of different politicians, because then only they will get the news about what is going on or what kind of changes going to occur. Then is knowledge of current issues. The company secretary must know the current affairs and present problems. The current affairs may affect the development of the company. In Assam, certain group has put restriction on exporting crude oil. In such type of situation, the secretary may provide proper guidance to board of directors to prevent such situation in future. Now here knowledge of current affairs. क्यों कंपनी सेक्रेटरी को क्यों नॉलेज की ज़रूरत है? उनको तो IAS नहीं बनना होता है. They are getting a well paid for their job. उनको ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी होती है. करंट अफेयर से उनको क्या फ़ायदा? करंट अफेयर से उनको फ़ायदा नहीं होगा. करंट अफेयर से फ़ायदा होगा कंपनी को, डेवलपमेंट ऑफ कंपनी. क्यों? बिकॉज देन ओनली दे कैन एडवाइज प्रॉपरली, दे कैन गिव प्रॉपर गाइडेंस कि भाई सो एंड सो सिचुएशन इज गोइंग टू हैपन. अभी अगर हम आजकल की बात करें या तो प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, वी आर नॉट इन अ गुड टर्म्स विद चाइना. चाइना के साथ ड्यू टू मैनी डिफरेंट रीजन अभी सिचुएशन इज नॉट गोइंग वेल. सो इवन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वॉर is also one of the worst situation that can happen to anywhere, but that can also affect the company. Here they have given the example that Assam certain group has put restriction on exporting crude oil. Whatever crude oils were present there, they are denying to export it. That means the people who are in the business of exporting the crude oils, they will face a big problem or a big trouble because of this restriction. So this is the scenario that can which is required. Current situation or current affairs are very much important for development, for benefit of company. अगर कंपनी लॉस में जा रही है, and if the company secretary is quite intelligent and he is or she is well aware with the upcoming situation, then लॉस में जाती कंपनी को भी वो प्रॉफिटेबल कर सकते हैं. एंड सेम वे इफ दे आर नॉट वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, देन अ प्रॉफिटेबल कंपनी कैन ऑल्सो फेस द बिग लॉस. Excellent command over English and other languages. Yes, now see, here many students, I have also I have met them personally, that if they have
decided to become a scientist, if they have decided to become a doctor, their main focus was on science and whatever the main subjects are. But they forget that whatever subject they chose, whatever subject they like or they want to select the field, but their most of the time their answers will be written in English only or particular language only. So that is why, and in nowadays, in today's world, English is an international language, and to communication for business, it is only English language which most of the country has accepted. The company secretary has to follow correspondence with various parties in English. The company secretary must be excellent in English. With the development of company, it has to deal with foreign company. At that time, foreign language is helpful for the secretary to understand and agree and do agreement with the foreign companies. So one thing, that excellence in English is required. It is must. You cannot say that I have a gold medal in accounts, I have gold medal in my CS, but I don't know English. I cannot converse in English. That is not acceptable. So you must have excellent language knowledge, but with that as well, if you know any of the foreign language, then it will be profitable, because then you can understand. If you are dealing with any of the company outside of India, if for example you are dealing with France and the communication or if the agreement is in French language, so if you are aware with that language, it will be well and good, because then you don't need a translation, you don't need a translator, you can by yourself communicate with those people. So it is not required, but if you have any foreign language knowledge, then it will be helpful. English is must. Knowledge of public relations. The company secretary has to maintain relations with various parties. The relationship with such parties is essential to build up confidence amongst these parties. In the long run, it helps to increase the prestige and goodwill of the company. So the knowledge of public relation is a basic requirement for the company secretary. If you are doing a great profit, if the company is in for so many years, they are making a large profit, still they need to maintain relations with different companies in the society or in the competition, whatever they are in a cutthroat competition with another company, but still they have to maintain a good relationship, because that is the essential, that is the must, it is required to build a confidence between the people. आपकी एक अच्छी इमेज बनती है जिससे लोग आप पे भरोसा करते हैं. इफ यू हैव मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, इट विल क्रिएट अ गुडविल that no, people can trust that company easily. So public relationship is also required. And I don't know if you have heard, many companies have specially PR department, public relation department, PR manager भी होता है. Especially if you have heard, the movie actors and actresses that they have their PR manager. क्यों? क्योंकि एक इमेज बिल्डिंग जो होता है कि एक्टर या एक्ट्रेस की एक इमेज अच्छी करना पब्लिक के सामने, ताकि लोग उनको पसंद करें, उनको एंडोर्समेंट दे, उनको फिल्में मिले. सो दे रिक्वायर्ड सर्टेन पीपल हु कैन क्रिएट देयर इमेज. सेम वे द कंपनी ऑल्सो रिक्वायर्ड अ PR, अ पब्लिक रिलेशन. लोगों के साथ उनका एक बिल्डअप होना चाहिए. मुकेश अंबानी खुद नहीं आता हमारे पास कि भाई आप जियो का कार्ड ले लो, we are giving you so many offers. No, it is their PR department who are designing the whole advertisement कि उसको किस तरह से एडवर्टाइज करना है, उस तरह उसको किस तरह लोगों तक पहुंचाना है.
और किस तरह ये ट्रस्ट बिल्डअप करना है कि लोग जो अपना रेगुलर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, सिम कार्ड यूज़ करते हैं, उससे वो जियो में कन्वर्ट कर दे. सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप a goodwill and prestige of a company. And the last qualification is knowledge of computer and other electronic gadgets. For any field, any such field, now the knowledge of computer is must. And if you know the other gadgets, it will be beneficial. In the modern time, computer has become a basic requirement for company. Computer is very helpful to store various types of information regarding shareholders, debenture holders, board of directors, creditors, and other information of company on a huge scale, which saves time, resources, and human labor. To gain this advantage, knowledge of computer is essential. Moreover, he must be well conversant with electronic gadgets which are used in office administration and to command and control over indiscipline of employees. Now here, computer knowledge, we all know why it is required, especially to store a data or information. And it can be various information, various type of information. छोटी से छोटी employees की डिटेल्स से लेकर कंपनी के प्रॉफिट लॉस, उनके कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट, सारी चीज़ें कंप्यूटर्स में ही स्टोर होती है. सो ही मस्ट बी अवेयर एंड ही मस्ट बी वेल वर्स विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. देन ऑल्सो ही मस्ट बी वेल कन्वर्सेंट विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंपनी में अगर कोई यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमरा, क्यों उनको पता होना चाहिए? बिकॉज देन ओनली दे कैन हैव अ कंट्रोल ओवर इनडिसिप्लिन ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर उनको पता है किस तरह से सीसीटीवी कैमरा मैनेज करना है, देन ओनली दे कैन हैव द कंट्रोल ओवर कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो ठीक से काम नहीं करता, लेट आता है, जल्दी चला जाता है, बंक करता है, ब्रेक ज़्यादा लेता है, दे कैन गेट टू नो अबाउट एवरी सिंगल डिटेल्स. सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है. सो दिस आर दी 10 डिपार्टमेंट्स इन विच कंपनी सेक्रेटरी मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट, knowledge of various act, knowledge of economical and political affair, knowledge of current issues, excellent command over English and other language, knowledge of public relationship, and lastly knowledge of electronic and computer. So these are the things or qualification which company secretary requires. Okay, here we end this portion. हम यहाँ पे वीडियो हमारा एंड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी एंड लीगल प्रोविजन. क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, कंपनी सेक्रेटरी किस तरह से काम करता है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है. वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो. योर होमवर्क, लेट अस सी व्हाट इज इन योर होमवर्क. In your homework, at the end of the lesson, you have given what have you learned in this chapter. उसमें से आपको एक पार्ट लिखना है इंट्रोडक्शन एंड क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन, जो शॉर्ट में सारी क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन दी है. दैट यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर नोटबुक. सो दैट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. ओके, only this much detail, qualities and qualification in short, which is given here, you have to note down in your notebook. Here we end our video. Do take care of yourself and have a very good day.